Welcome back. The national capital saw brief improvement in visibility today as dense fog lifted, but the air quality remains firmly in the severe category, still offering little real relief. As people are outraged, Chief Minister Rekha Gupta was greeted with chants of AQI from the crowds as she welcomed football legend Messi at the Arun Jaitley Stadium. The opposition has stepped up its attack, demanding accountability, calling for an urgent parliamentary debate on the worsening air emergency. The crisis is turning deadly with smog-related low visibility causing fatal accidents as well. Zero visibility led to a multi-vehicle crash at Yamuna Expressway, claiming at least 4 lives and several sustaining injuries. First up, we play out political reactions that have come in on this story. Listen in. In 2019, I had moved a 193 on pollution and I had led the discussion in the Lok Sabha. Nothing has changed between 2019 and 2025. Pollution is worse. I have a 193 on pollution in this session also. So therefore, under those circumstances, this is the most critical thing Parliament should be discussing. देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली बदहाल स्थिति में कैसे पहुंची। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन पोल्यूशन पर एक भी कदम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उठाया नहीं। जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, सरकार लगातार पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रही है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो। सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देंगे, लेकिन क्योंकि 10 साल में इतना बदहाली हो गई है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। हर चीज़ में कंटेमिनेशन है और मैंने तमाम वो होर्डिंग देखे जिसमें ये कहा कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये मिलावट में घोटाला करते हैं इनके लोग। इनके यहाँ तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, जितने भी खाने के सामान है उनसे मिलावट है, खाद दे नहीं पा रहे हैं, हमारी मिट्टी में मिलावट है, जिसको बता रहे थे कि हम सॉइल कार्ड बनाएंगे। आप देखिए कितनी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई, कंटेमिनेशन कहाँ तक पहुँच गया है। और रिवर्स आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हमारी नदियाँ, यमुना देखिए आप, उसमें पूरा क्या बह रहा है। तो ये अंततः कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, और फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी? Well, we've been hearing the AQI levels across the national capital in different pockets of the national capital. There's been a marginal improvement from what the numbers look like over the weekend, but still AQI in the hazardous category. Let's tell you a little bit about the impact this has on your health. When the air quality index crosses 100, it is equivalent to smoking 2 cigarettes a day, which is pretty much the case through the year. At 200, your lungs take the hit of 7 cigarettes a day. Above 400, which has been the case the last few days, that's 23 cigarettes every single day, which has been the case, like I said, in the national capital, at least for the last few days. The last few months, 2 months to say the least, have been worrying for the residents of the national capital. Beyond 850, it's like smoking 43 cigarettes a day. You don't need to smoke to destroy your lungs in Delhi this season. And that's what doctors also opining, that this is extremely harmful. Children's lungs are being seen as the lungs of chain smokers. Sometimes just breathing is enough to get to this point. I do want to go across to Anshul Singh, who joins us on the phone line with more details. Anshul, a lot of emergency measures have been implemented, invoked. We're seeing schools, at least up to class 5, switch to online mode completely. All of that is being done. What's the situation though in the national capital? Take us through the AQI numbers. Is this a continuation of what we've seen the last few days or slight improvement today? Well, yes, if we compare the AQI numbers that we have seen over the last few days, there is definitely a slight improvement. Over the last 3 days, the AQI was in fact in the severe plus category, but today it is in the very poor category, and the approximate AQI that is being shown at this point in time is around 377, which continues to remain in the very poor category. Yes, short-term measures have been taken by the government. They can be seen being implemented on the ground as well.
But the larger question that still remains and that needs discussion as well is the long-term plans that have been made by both the central government and the state governments of different states across North India. On that, there is very little discussion that has happened, and that is something that has given a lot of ammunition to the opposition to attack the BJP government out here in the national capital. In fact, Aam Aadmi Party MLAs like Saurabh Bhardwaj have put out several posts on social media platforms claiming how the government has absolutely failed when it comes to controlling this entire menace of pollution out here in the national capital. So yes, the political bickering has started, but still the larger discussion that needs to happen on the long-term goals and the long-term plans as to how this issue of pollution can be resolved for once and for all, that is something that cannot be seen being discussed or between the ministers per se and the officers at this point in time. So it remains to be seen if that larger discussion will finally start out here, and probably from next year onwards we can actually expect some improvement. But as IMD is predicting this time around, that over the next few days as well, keeping in mind the western disturbances and the wind conditions that will happen over the national capital, it is expected that the AQI will remain in the very poor to severe category at least for the next 1 week. Well, Delhi's geographical location, how it's landlocked, apart from low wind speeds, of course, further worsening the situation for the residents of the National Capital Region, which has led angry people to raise questions with politicians. Let's listen into what BJP MP Kamaljeet Sherawat has said in the latest. बहुत डिस्कशन भी हो, बीजेपी काफी बड़े वादों के साथ आई थी कि पोल्यूशन को हम रिजॉल्व करेंगे। आपको तो लगता है कि उस मामले में अभी काफी काम होना बाकी है, कि पोल्यूशन तो अभी भी बहुत है, ग्रैब 4 लगा हुआ है? दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा जी ने और सभी मंत्रियों ने मिलकर लगातार दिल्ली के पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर काम किया। हमने देखा कि जगह जगह रोड के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स को डिप्लॉय किया गया है और वहां से पानी का छिड़काव लगातार होता है। वाटर स्प्रिंकलर्स, MRS मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन वास्तव में पॉल्यूशन का लेवल बहुत अधिक है। ये बात चिंता की है और इसीलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके ऊपर एक स्टडी कर रहे हैं कि इसका पर्टिकुलर रीजन पता चले और स्टडी के अंदर पर्टिकुलर हमें काम पता चले जो हमें करने चाहिए। पिछली सरकारों ने जो इसमें कमी छोड़ी उससे आज हमारे पास पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर जो इसकी रेमेडीज हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो ये जो अभी समय चल रहा है इसके अंदर सरकार अपनी डिटेल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब सरकार इसके ऊपर गहनता से काम करेगी तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम होते हुए देखेंगे। आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है कि हमें, आपको बीजेपी ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया इतने साल, आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे। लगातार 27 साल से दिल्ली में जो सरकारें रही, पहले 15 साल कांग्रेस की और 11 साल आम आदमी की, अगर उन्होंने काम किया होता तो स्थिति नहीं होती। आज इस स्थिति को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस स्थिति पर काम करने के लिए सरकार चिंतित है और आपको काम होते हुए नजर भी आएगा। मैम